Hello students, I hope you are well and at your home. Dear students, we are doing applications of sets, some problems on application of sets. Now if we have three finite set A, B and C, we have three finite set A, B and C. A, B and C. A, B and C. We need to find cardinal number of A union B union C. We need to find cardinal number of A union B union C, either total cardinal numbers of set A, B and C. So you can say this complete A, complete C, complete B. We need to find whole A, B and C. Now let us see. Now A union B union C. A union B union C is equal to, if I will take set A, complete set A, plus A plus B, A plus B, you know, अगर कंप्लीट A ले लिया हमने, इट मीन्स ये वाला पार्ट and complete B, complete, and you know A union B union C means whole three circles, but don't repeat नहीं होना चाहिए, complete three circle. So A plus B also. तो you know, अगर मैं complete A को लेता हूं, if I will take complete A, complete B, this part repeats, and this part is called intersection of A and B. Intersection of A and B दो बार हो चुका है, वो सेट A में भी आ गया, सेट B में भी आ गया. So one time इसको क्या करेंगे, माइनस A intersection B. Okay. If I will take plus C also, तब अब आप देखेंगे अगर मैं C को भी ले लेता हूं तो कंप्लीट B कंप्लीट C में जो B और C का कॉमन पार्ट है, जैसे पहले ये पार्ट था A और B का कॉमन पार्ट, फिर ये पार्ट हो गया B और C का कॉमन पार्ट. ओके, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये B में भी इंक्लूड हो गया, ये C में भी, तो 1 टाइम क्या होगा, माइनस. सिमिलरली A और C का भी रिपीट हो गया, इट इज ऑल्सो माइनस. If we will add A, B and C and subtract intersection of A and B, B and C and C and A, तो इस केस में हमने कंप्लीट ये तो ले लिया, बट हमारा ये पार्ट नहीं आया, ये लेस हो गया टोटल. और यू विल सी, ये देखिए कौन सा पार्ट है, इसको सेट सी भी कवर करता है, सेट बी भी लेता है, सेट ए भी लेता है. इट मींस इंटरसेक्शन ऑफ होल ए बी सी कंप्लीट. तो ये हम ऐड करेंगे, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये तो हो गया वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग.
बट हमें तो उनका कार्डिनल नंबर चाहिए काउंटिंग, तो सो वी विल अप्लाई n। क्या अप्लाई करेंगे? n। तो हमारे लिए प्रॉपर्टी क्या बन गई? n इंटू A यूनियन B यूनियन C इज NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B NB इंटरसेक्शन C NA इंटरसेक्शन C और प्लस N intersection of A, B and C. Now if we want to solve the problem of three finite set, so we have one formula is NA union B union C equal to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NA intersection C and plus A intersection B intersection C. Now you are clear? Now example. Now we have one problem. 21 people like product A, 26 like product B, 29 like product C, 14 like product A and B, 12 like product C and A, 14 like product B and C, and 8 like all. So we will solve it by using Venn diagram. We have three product A, B and C. A, B and C. So for such type problem we will start from, and either you can say what is common of all. So you know 8 people like all the three product A, B, C. So it is common of A, B, C. So we will write here 8. So we will write here 8. So you will start from common. Clear? 8 products liked by A, B and C. Now how many products liked by A and B? You know A and B 14 here. A and B 14. A and B common 14. टोटल कितने कॉमन है बेटे? 14. 14 में से हम कितने लिख चुके हैं? 8. तो रिमेनिंग क्या रह गया? 6. ओके, रिमेनिंग क्या रह गया? 6. तो 8 and 6 14. Similarly A and C 12. 12 product liked by A and C. So we have written here 8. So you know 8 4 12. Now B and C also 14. B and C liked also 14. So B and C 14. 8 we have written, to 8 plus 6 14. Clear? So we have fill up the process. Common and all have 3 have common. Now you know A have कितना हो चुका है A के पास? 6 4 10 8 18. 18 प्रोडक्ट किसके पास आ चुके हैं? A के पास. बट A के पास कितने हैं? 21. तो रिमेनिंग क्या रह गई? 3. तो नाउ 8 4 12 6 18 और 3 21. Okay. Now B have 6 6 12 8 20, but here 26. So remaining is 6. Now C have 6 4 10 8 18, but C have 29. So remaining is 11. Clear? So now by using this type
you can fill directly Venn diagram. Okay, now आंसर भी आप कैसे निकालेंगे? अगर क्वेश्चन पुट किया जाए हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली सी में कितना है 11, ओनली ए 3, ओनली बी 6. ओके क्लियर? So you can solve the problem of 3 finite set application problem by using Venn diagram. Now another problem, if total students 25, in which opted mathematics 15, physics 12, chemistry 11, maths plus chemistry 5, maths plus physics 9, physics plus chemistry 4, and all three have 3. Okay, so now by using Venn diagram, physics, chemistry, maths, physics, chemistry. So we will start from common. On math, physics and chemistry 3 students. It is common part, we will write here 3. Okay. Now maths plus chemistry 5. Maths plus chemistry 5, we written here 3. तो remaining क्या रहेगा अपने पास 2. Math plus physics 9. Math physics 9 यहाँ हमने 3 लिख दिया तो कितना रह गया 6. Physics plus chemistry 4. फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 4 हमने 3 लिखा यहाँ पे तो रिमेनिंग कितना रह गया 1. ओके, तो नाउ मैथमेटिक्स 6 3 9 to 11, टोटल कितना मैथ्स में 15, तो यहाँ क्या आएगा 4. तो नाउ 6 4 10 3 13 to 15. फिजिक्स 12, 6 3 9 1 10 and 2 12. Chemistry 11, 3 2 5 1 6 and 5 11. Okay, now on behalf of this you can find out only mathematics 4, only physics 2, only chemistry 5. Which opted maths, only maths and physics 6, only physics and chemistry 1, only math and chemistry 2. Only math and chemistry 2 means not physics. Okay, so only math and chemistry we will take 2. So how many students opted all the 3 subject? All the 3 subject. So you will add all. You will find 3 to 5, 5, 6, 11. Okay. Now you can add, and how many students? 25. How many students? 25. Now some question based on Venn diagram. Only chemistry here. So how many opted only chemistry? Only chemistry is 5, this part. Only maths this part 4. Only physics 2. Physics plus chemistry but not maths. You can say physics plus chemistry, ये total आएगा, but not math means 3 काउंट नहीं करना, तो ओनली क्या आया 1. फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बट नॉट मैथ. मैथ प्लस फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री. मैथ प्लस फिजिक्स 6 3 9 but not chemistry means only 6. Only one subject, so only one subject. 5 only chemistry, 4 only mathematics, 2 only physics, 11. At least one of 3 subject. At least one of 3 subject means union of all.
M union P union C. So you will add all 5 1 6 6 2 8 2 10 3 13 4 17 6 23. How many students opted at least one subject? 23. And last is none of these. None of three. या none of three subject. किसी ने कोई भी subject नहीं लिया. टोटल स्टूडेंट कितना था? 25. ऑप्टेड कितना है? 23. तो इट मींस 25 minus 23 2. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, today we will solve the problem based on three finite sets. Based on three finite sets application, and you are doing well. Most of are sending me pic of homework. Stay home, stay safe. Thank you.